Namaste. Welcome to another episode of Blessing Ready with Commander Uncle. As you know, in this program, we celebrate life. We celebrate the divine in common people like you and me. People who do their job diligently, who respect their work, and who are true karma yogi in the best sense of the word. But before I introduce you my guest of today, I would like to share a small story. Vishnuji and Naradji were together. And Naradji, for very good reason, always thought he is the greatest devotee of Lord Vishnu. So, in a way to reconfirm, he asks him, Lord, who is your greatest devotee? And to his utter surprise, Lord gave a name of a farmer who was essentially tilling his fields and making his ends meet. He said, but why? Look at me. I am singing your praise all the time. I cannot think of anybody other than you at any given time. So why am I not your greatest devotee? So Vishnuji gave him a task, a vessel full of oil to the brim, and said, take it, go around the earth, come back to me, just make sure not a drop spills. That was easily done, and Naradji came back with a sense of accomplishment and happiness. He says, Lord, I have done that, and there is absolutely no drop that spilled ever. But then, while you were doing this, how many times you remembered me? And this was the moment for Narad to get totally surprised. Not even once, Lord. See, when you do nothing, it's easy to be a devotee. But look at him. He remembers me all the while he is working in his field. He remembers me while he is taking care of his family. He remembers me when he is happy. He remembers me when he is sick. Essentially, he does not stop working and he does not stop remembering me. So the lesson was, Prabhu si nagar kije sab kaja, hriday rakhi kaushalpur raja. A devotee who works while remembering Lord is the true devotee. Lord Krishna said the same thing to Arjun when Arjun asked, Lord, what is the best way to get to you? Krishna responded by telling him, those who work hard, who do tapa, who acquire all the knowledge, sometimes get to me. But those who remember me and do their job find me very easily. These are karma yogis, and today I have the pleasure and honor and privilege to introduce you to a karma yogi in the true sense. We are going to meet and interact with Mukul Agarwal, a person, a divine soul that always loved meeting, interacting, sharing my sorrows and happiness, and is a true brother in every sense of the word.
He belongs to a very illustrious family where event and exhibition management dates back to over 100 years. It's now time for us to meet Mukul. Mukul, welcome to the show. Jai Guruji. Jai Guruji, thank you so much for joining us on this Thank you. program. It's my pleasure, Uncle. And before we move any further, there's so much that your family has done in this field, and I know you have been associated with Kumbh Mela for generations. So let us know a lot more about it, please. I'm fourth generation in this company, and was started by my great grandfather, Devotee Agarwal. So people used to call him Laluji. So the company name came as Laluji, and as his generations went on, the company name became Laluji and Sons. So I'm the fourth generation. We started all this from the bank of River Ganges at Allahabad, now called Prayagraj. We've been doing the entire setup for government for putting up camps and all the arrangements that are done at the bank of River Ganges, Gangaji. Now the fifth generation is also into the business, and the most interesting thing here is my grandfather was very close to Nehruji. There's a small story about that, how we came to Delhi. If you permit, I can share By all that. means, please. Yeah. When just after partition, the biggest challenge for the newly formed ministry was about education. So there was a meeting going on with Nehruji, with his cabinet and his bureaucrats. So everyone was worried how to have buildings and all that in such a short span. So how to educate their children here? So Nehruji said, why don't you call my friend? He used to, my grandfather was a very good friend, and he also used to call him Laluji, whereas his name was Govindas Agarwal. So they asked him, who is this Laluji? Laluji. So he said, he's my friend, and he's a person who can create cities overnight. So they were surprised, how can someone create cities overnight? So he said that he's been doing a lot of work for us for generations for Kumbh Melas. So just connect me to him. So the team connected to my grandfather. And Nehruji said that you come, take the next train and come and meet me the next day morning. So he went there and he shared, so tell me what can be done. So he said, not a problem, you just tell me how many children you want to enroll and how many schools you want. So what spaces, vacant areas you have, just let me know. So he said, as many classes you can make, we are ready with that. We have to educate everyone, all the new generation. So he said, no, not a problem. What I will do, I will put up a barricade in a vacant land. We'll provide you with tents
with the carpet underneath, and you can start in those classes, and you can come up with the buildings. And by the time the building is ready, I will take that material back. So he said, how much? How many can you provide? He said 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, as many classes you want. I can provide you that. So this is how we came to Delhi, and then we started with all these work, and slowly and gradually we came into bringing imported structures, German structures, and then with many other verticals, we started our business. Now we have the biggest inventory in Asia for these temporary exhibition setups, and with that we have different verticals, like if you would have heard of Run of Kutch. So we have a Run Utsav, a tented city there, which we are managing and on a PPP model with the government of Gujarat. We have another setup at Unity of Statue of Unity. There's a tent city that is also run by us, maintained and run by us. Likewise, we have many other properties in hospitality sectors which we are running. Tell us about the Kumbh experience. Kumbh. Basically, the Kumbh happens at the bank of Gangaji. So what happens when during this period when the Kumbh happens, the Gangaji, shrinks, and on those banks of Gangaji, we have the entire temporary accommodation done. So all the entire setup is temporary, because that is done at that particular area, and it is not less than around about 25 to 40 kilometers of square kilometers of area where this setup is done. So we provide the entire temporary setup there with electrification, with making of roads, with their sanitary accommodation, their toilets, their electrification. The complete setup is done by us. This is most impressive. Actually, now you have a reputation that when something is impossible, just give it to Mukul. And it's all GuruJi's Maharaj. It is indeed. And I remember the Chennai Deaf Expo, where I don't know, it was huge space given to you just 15 days back, and for everyone, including me, thought it's not happening. And it turned out to be one of the biggest successes. Yes, I think you also visited there. We were together because you being in forces. So life has its all ups and downs, and when everything seems to be going all right, then suddenly things go wrong more than they can ever be, and then you end up in front of a roadblock and not knowing what to happen. And this happens to people who are spiritual in nature far more easily than happening to people who are not that kind of aligned with the divine. Tell us about that. As you said about Deaf Expo at Chennai, it was at the ECR close to between Chennai and Mahabalipuram. So what was happening, we were allocated one space, a huge space where this was to happen. And due to this problem with the environment department, they objected to it that you cannot have this event just close to the coastline. So
we were around about more than 100 trucks waiting on the road for unloading. We were not able to do that because it has to happen at the venue itself. So the time was already the time was very short, and the entire thing was to happen on a beach surface. It was a sandy surface. To put up all these structures, which are very heavy structures, you can't just put those on those because for stability purpose, you have to have a strong base for those structures. And we were losing time, and as you know, Uncle, it was. I know. It was so hard for us. It was getting harder and harder because no truck could go into that area because of sand. So we have to unload all the material on the roadside, and then to take the entire material inside, or first to have the roads developed inside so that the vehicle can go inside. So it was actually becoming very challenging. But by that time we were in the Sharan of GuruJi, so we never lost hope. It's not going to happen. Because with GuruJi, now I can say it. Nothing is impossible because he is there. He is taking care of us. He knows what to do, when to do, how to do, what to do. We leave everything on him because he's there with us. And Mukul, there was an event in the family which actually led you to connect to Maharaj. Yes. Yes, Uncle. That is how I actually got connected and got so much into spirituality. मैं यही कहूँगा अंकल कि क्योंकि मैं कुंभ मेलाज और मतलब शायद ही कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु होगा जिनके लिए हमने काम नहीं किया होगा, उनका सेटअप नहीं किया होगा, चाहे वो जैन समाज का हो, चाहे वो बोहरा समाज का हो, चाहे वो अपने कितने भी मठ हों, उन सब का हमने काम किया क्योंकि हम लोग अपना इससे जुड़े हुए हैं उनसे। अक्षरधाम का आज भी जितना भी हिंदुस्तान में काम होता है वो सारा हम लोग करते हैं। तो कभी भी एक अंदर से जुड़ाव नहीं हुआ, काम करते थे, काम की तरह काम किया, नॉट लाइक कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन कभी किसी से नहीं हुआ। लेकिन मेहनत से किया, डिवोशन से किया, काम को काम की तरह से समझ के किया और ईमानदारी से किया। लेकिन कभी एक जिसे कहते हैं कि किसी भक्ति भाव से भी ज्यादा किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ एक कनेक्शन नहीं हुआ। ये कनेक्शन और जो एक स्पिरिचुअलिटी आई, ये गुरु महाराज के आने के बाद ही आई। और वो जैसे आपने कहा कि वो इवेंट क्या हुआ कि 2012 में मेरे बेटे को ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ, ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। और समझ नहीं आया कि क्योंकि मेरे को ये कहते हुए कोई भी जरा सा भी हिचक नहीं हो रही कि मैंने कभी भी किसी के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया या कभी भी किसी को दुख पहुंचाने के लिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। फिर मेरे दिमाग में हमेशा यही आता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हो गया, हुआ। और अब मैं कहता हूं कि वो मेरे को चेंज करने के लिए हुआ। मेरे को एक स्पिरिचुअल गुरुजी मिले, ऐसा गुरु मिला जिसने मेरे को मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। मतलब अब मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता। मुझे काम मिले नहीं मिले, ज्यादा मिले कम मिले, मैं मतलब मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। नहीं तो मुझे याद है पहले मैं बहुत परेशान हो जाता था कि कोई काम होते होते कुछ काम नहीं हो रहा होता था, कभी नहीं हो रहा होता तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद सबसे बड़ी चीज जो मेरे को मिली वो मिली एक
सेटिस्फैक्शन और एक कॉन्फिडेंस कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो जब मेरा बेटे को कैंसर हुआ, डायग्नोज हुआ, तो मैं गुरुजी को नहीं जानता था, गुरुजी के बारे में भी कभी नहीं सुना था, लेकिन वो आपने सत्संग सुना ही होगा अंकल कि कैसे गुरुजी अपने से आए। तो मेरा यही मानना है कि सबके साथ गुरुजी हैं, जो नहीं भी जानता उसके लिए गुरुजी हैं, और गुरुजी अपने आप से उसके पास आते हैं। अब उसको है रियलाइज करना कि उनका गुरु उनके साथ है कि नहीं है, जो कि मैंने रियलाइज किया, और मेरे को गुरुजी ने रियलाइज कराया कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब से अब तक की जर्नी महाराज के साथ ही है। और फिर बेटा तो ठीक हो गया, इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ी? हाँ अंकल, वो भी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है कि जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसका ट्रीटमेंट होते होते तब तक महाराज से हम लोग जुड़ चुके थे, महाराज की शरण में आ चुके थे। तो एकदम से वो हमारे को यूएस ले गए ट्रीटमेंट के बीच में। तो वहां गए, वहां पर टेस्ट कराए, तो टेस्ट में आया कि इसको कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ही इज एज गुड एज यू एंड मी, दैट वाज द डॉक्टर ने बोला, ये चीज बोला। तो वो हमारे लिए एक मतलब एक लाइफ चेंजिंग चीज थी कि जहां पर इंडिया में सब कह रहे थे कि इसका बचना नहीं है, और ट्रीटमेंट चल रही थी और बहुत लंबी ट्रीटमेंट थी, और गुरुजी कैसे वहां हमारे को ले गए इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। ट्रीटमेंट चलते चलते बीच में हम लोग वहां पहुंच गए। और तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में जी, और वो आती हैं चली जाती हैं, और आपको एक डिविनिटी से कनेक्ट हो जाता है, तो लगता है अच्छा ही हुआ प्रॉब्लम्स आ गई, कम से कम आपको एक बिल्कुल है अंकल, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आती तो आदमी अपने अंदर का जो अंदर भगवान है उसको देख नहीं पाता। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम या दुख जो आते हैं वो मेरे भगवान इसीलिए देता है कि आप अपने आप को पहचान सको, और जो सब कुछ उन्हें देता है उसको पहचान सको। और फिर जब कोविड टाइम्स आया और सारा काम बंद हो गया और करीब 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, आई रिमेम्बर वॉचिंग यू विद द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट सेइंग आई एम नॉट वरीड। और हम लोग मजाक में कहते थे, मुझे याद है मैंने आपसे भी कहा था, मुकुल आराम कर लो जितना करना है, बिकॉज जब चीजें ठीक होंगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और लुक व्हाट हैपेंड। Tell me about this break that you got. Yes, हाँ बिल्कुल अंकल। कोविड आया तो मतलब महाराज की कृपा ऐसी है कि लोग हमारी इंडस्ट्री में अपने जो उनकी टीम जिनको उन्होंने तैयार किया था, इतने साल से रखा हुआ था, सबको उन्होंने निकालना शुरू कर दिया कि फाइनेंशियल बर्डन उन पे नहीं आए। मैं सब गुरु महाराज की मेहर कहता हूँ कि उन्होंने इतना सक्षम हमारे को रखा कि हमने अपनी सारी पूरी टीम, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने हमारी टीम है, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सबको हमने अपने पास रखा, चाहे वो घर रहें चाहे कहीं भी रहें। उनकी सैलरीज, उनको जो चाहिए था वो हमने प्रोवाइड किया। हो सकता है महाराज ने वो हमारे को क्षमता दी और हमारे को मतलब उस तरीके का इंसान बनाया कि जो हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए हमें आगे से बढ़ के करना चाहिए। और आपके लिए टेस्ट भी था ये कि देखें कि ये मुसीबत में शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। बिल्कुल था अंकल, बिल्कुल था। और इसी वजह से ही मेरे ख्याल से महाराज ने भी हमारी टीम इतनी स्ट्रांग बना के, क्योंकि अंकल किसी भी बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपकी टीम नहीं है और आपकी लॉयल टीम नहीं है। लॉयल टीम तब होगी जब आप खुद लॉयल हो गए उनके साथ। बिल्कुल। तो
It is from both sides. मुझे किसी ने बताया था कि लॉयल्टी इज समथिंग दैट लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फर्स्ट it should flow from top, then it fills up and drowns you. Yes. So you have to start with being loyal to your team before expecting loyalty from the team yourself. Absolutely. And you did the right thing. बिल्कुल अंकल. और मैं इसके लिए गुरु महाराज को ही सारा वो दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की थॉट हमारे अंदर और ये लाए. ये गुरु महाराज में फेथ आपका जी. वो टाइम भी निकाल दिया जी. और बिना किसी चैलेंज के निकाल दिया जी. और फिर आपको G20 बुला के हमारे उसके लिए हम सक्षम भी नहीं है. तो हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से आज तक का सबसे बड़ा इवेंट है G20 जो हो रहा है. महाराज ने उसको तीन कंपनियों में वो इवेंट हो रहा है जो कर रहे हैं पूरे इंडिया में. तो उसमें हमारे को सबसे ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमारे को दिए. अराउंड अबाउट 200 कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पैन इंडिया. वी आर डूइंग मोर देन 90 ऑफ दैट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल द मेन कॉन्फ्रेंसेस ऑफ G20. तो ये हमारे उसका नहीं था, औकात से ऊपर की चीज है. और ये महाराज की ब्लेसिंग से ही हो रहा है जो भी हो रहा है. पहले ये बताया मुकुल कि स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं या नहीं? अंकल करता हूँ, उसको शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि महाराज का ही कहना है कि इस हाथ से दो दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि इस हाथ ने दूसरे हाथ को दिया. तो मैं उस पे बात नहीं करना चाहूंगा कि क्या करते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं जरूर. महाराज जो करा सकते हैं, जितनी क्षमता है वो जरूर. लेकिन मेरा ये लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी जो मैं बोल सकता हूँ करता हूँ वो ये है कि जिस दिन बेटा हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल वापस आया, तब से लेके अब तक मैं और मेरी आंटी, हम लोग नहीं होगा तो 200-300-400 लोगों को तो हम सस्टेन करते हैं, लेके गए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है. और जो हेल्प कर सकते हैं वो करिए है, क्योंकि महाराज ने वही, मेरे ख्याल से वही एक हमारे लिए एक रास्ता दिखाया कि देखो पेन क्या चीज होती है. तो शायद इसीलिए वो हमारे को इस जगह लेके गए कि आप इस पेन से निकलोगे तो आपको एहसास होगा कि और कितने लोगों को ऐसा पेन गुजर रहे हैं. तो शायद हो सकता है इसीलिए महाराज ने ये पेन दिया कि हम भी आगे वो पेन को बांट सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें. मुकुल, जब हम लोग आध्यात्म की बात करते हैं और उसको आपके बिजनेस से लिंक करते हैं, तो मुझे एक इवेंट याद आ रही है जब गुरु महाराज ने आपको एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट दिया था. जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर ओपन हो रही थी, उसके बारे में और उससे जुड़े चैलेंजेस के बारे में बताइए. बिल्कुल अंकल, वो आपने जो पूछा वो याद करते ही पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंकल. ऐसा था कि जब ये 500 साला गुरु गोविंद जी का चल रहा था, उस पर बहुत बड़ा पंजाब गवर्नमेंट सेलिब्रेशन कर रही थी. तो उस टाइम हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके टेंडर्स में, मैं और बेटा हम लोग गए पंजाब में, चंडीगढ़ गए, जहाँ उनका इवेंट जो होना था वो होना था सुल्तानपुर लोधी में. और वहाँ पे और कुछ करतारपुर, ये डेरा बाबा नानक जगह है, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होने थे. तो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने बिड किया. बीइंग फाइनेंशियल उनके उसमें भी हमारा रेट कम होना, टेक्निकली हमारा हाई होना, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी काम हमारे को
नहीं मिल रहा था। तो बेटा बहुत अपसेट हो गया। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, हो सकता है गुरु महाराज नहीं चाह रहे हो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे को ये काम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। अंकल, गुरु महाराज के होते हुए मैं ये कह ही नहीं सकता कि यू कांट बिलीव कि ऐसा हुआ क्या कि एक मुझे कॉल आता है कि एक टेंडर आया है करतारपुर कॉरिडोर का, जो वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्री ने है, दे वांट टू ओपन टू इनॉग्रेट वन करतारपुर कॉरिडोर, कि करतारपुर साहब का जो गुरुद्वारा है उस पे जाने के लिए वो कॉरिडोर खोलेंगे, और जो ये 550 ईयर्स का जो इवेंट है, सेलिब्रेशन है, ये उसी दिन करेंगे और इस पे आना जाना शुरू होगा। तो मैंने देखा, तब तक उन्होंने कहा कि इसकी टेक्निकल एक बिड के लिए एक पहले बुलाया गया था, वो आपसे मिस हो गया, आप नहीं गए, तो आप क्या करो, इसका टेंडर आने वाला है, उसमें टेंडर में बिड भर दो आप। तो मैंने कहा यार हमें पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि वो अटेंड करते मीटिंग तो पता लगता कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम उसको टेंडर को बिड कर देते हैं। तो हमने टेंडर बिडिंग में डाल दिया। उन्होंने फाइनेंशियल ओपनिंग के लिए बुलाया, जिसमें इनॉग्रेशन होनी थी डेरा बाबा नानक में, विच इज़ ऑन द बॉर्डर, और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में करतारपुर है। तो दिस वाज द कॉरिडोर जो करतारपुर साहब के लिए कॉरिडोर इन्होंने बनाया था, कि यहाँ से जो जाना चाहते हैं दर्शन करने, वो करतारपुर साहब को दर्शन करें और वापस आ जाएं। बेसिकली इट वाज LPI, लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कॉरिडोर बनाया था। तो जब वो ये सब चीज़ हुई तो बीच में सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि हम यहाँ पर इवेंट नहीं होने देंगे, आप खाली कॉरिडोर में जो करना चाहो कर सकते हो। तो दैट रैली चेंज्ड इनटू अ ह्यूज गुरुद्वारा, जो कि हमने पूरा 20,000 लोगों के लिए सेटअप किया। तो और वहाँ जो सबसे पहला शब्द चला, वो मेरे आज तक दिल में मतलब वो छूता है। सुबह सुबह जो पार्टी जो बैठे थे, वो दरबार साहब बनाया, वो हम लोगों ने पूरा संगत बैठी। तो जो सबसे पहला शब्द चला वो था, जिथे बाबा पैर धरे। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए मेरे गुरुजी का मैसेज था कि ये सब कुछ मैंने कराया है, मैं कर रहा हूँ, और जो भी तुमने किया है तो कभी भी निराश नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इट वाज लाइक कि उसके वर्डिंग्स भी आज मैं पूरा भूल नहीं सकता, लेकिन उसके वर्डिंग यही थे, जिथे बाबा पैर धरे। वो आपके पूजा का स्थान हो जाता है। तो वो मेरे लिए एक वाकई में पूजा का स्थान बन गया था, और रैली चेंज्ड इनटू अ गुरुद्वारा। और दिस इज हाउ, मतलब अब इसलिए कभी लगता ही नहीं कि वो ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी महाराज देंगे, जो अच्छा होगा वो देंगे। जैसे आप हमेशा कहते हो कि जो हमारे लिए अच्छा होगा वही वो देंगे, जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं देंगे। तो बस महाराज की। और आपको तो काम भी ऐसा दे देते हैं कि उसी से तो पूजा हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से मुकुल आपने अपनी बात कही। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, अपना काम मेहनत से करना और दूसरों के सुख को ध्यान में रखते हुए करना, कि किसी को तकलीफ ना हो, ये सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। और ऐसे कर्मयोगी को ब्लेसिंग्स लेने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आपके पास तो महाराज तभी भी थे जब आप उन्हें नहीं जानते थे, और आज भी हैं जब जानते हैं। बिल्कुल मुकुल, आप पे ईश्वर की, गुरु महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। आप इसी तरीके से परिवार के साथ सुखी रहें और
सबको सुखी रखें प्रार्थना के साथ में। जय गुरु जी। जय थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.